Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक तथा शेयर बाजार के ताजा समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। हम उन पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अर्जुन। Domestic stock indices witnessed gains of more than 0.5%. Sensex closes above the 61,000 mark and Nifty settles above 18,150 level. The rupee logs a robust gain of 52 paise against the US dollar, and Brent crude oil rises to $87.20 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में 0.5% से अधिक की बढ़त। सेंसेक्स 61,000 के स्तर और निफ्टी 18,150 से ऊपर जाकर बंद हुए। डॉलर के मुकाबले रुपया 52 पैसे मजबूत हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $87.20 प्रति बैरल तक पहुंची। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले हम सेंसेक्स के साथ में। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख 30 कंपनियों का सर्वोच्च सूचकांक 61,000 से ऊपर जाकर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 50 प्रमुख कंपनियों का सूचकांक 18,150 से अधिक के स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक शेयर बाजार के सकारात्मक रुख के चलते दोनों सूचकांकों में वृद्धि दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 390 अंक ऊपर चढ़कर 61,046 पर दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक की तेजी के साथ 18,165 पर जाकर रुका। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.46% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.17% की बढ़त देखी गई। Sensex and Nifty today witnessed gains of more than 0.5%. Index of the top 30 companies at the Bombay Stock Exchange ended above the 61,000 mark. The index of the top 50 companies at the National Stock Exchange, the NSE, closed above the 18,150 level. Both stock indices rose amid positive cues from the global stock markets. Sensex climbed 390 points to settle at 61,046. Nifty also gained 112 points to finish at 18,165. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.46% and the small-cap index added 0.17%, underperforming the Sensex. In the Sensex pack, 23 companies posted gains while 7 witnessed losses. Tata Steel was the top gainer as it rose by 2.7%. Larsen & Toubro gained 2.4%. Wipro and HDFC Bank both added 1.8% each. On the other hand, Tata Motors declined 1.7%, Ultratech Cement fell 1.2%, and IndusInd Bank slipped 0.6%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 16 sectors gained while 4 logged losses. The metal sector gained 2.4%, capital goods index rose 1.5%, and the industrial sector added 1.2%. On the other side, utilities index fell 0.5%, and the auto sector ended 0.2% down. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,873 companies gained while 1,638 fell. Shares among 38 companies remained unchanged. Let's have a look at how the rupee performed in today's trade, Nikhil. जी हाँ, अगर रुपए की हम बात करते हैं तो आज रुपए का कुछ इस तरह से असर देखा गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 52 पैसे मजबूत होकर 81.25 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर जाकर बंद हुआ और दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.48% नीचे आकर 101.90 पर आ गया था। और इस बीच हमारे साथ में तमाम कारोबार की खबरों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ गोपाल कृष्ण अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो गोपाल जी, सबसे पहले सेंसेक्स में हमने शुरुआत की थी, तो जो आज सेंसेक्स का रुख हमने देखा, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पिछले 8-10 दिन से जो सेंसेक्स है या निफ्टी है वो गिर रहा था और आज वापस ऊपर हो रहा है।
तो बेसिकली सेंसेक्स में बीच में कुछ कुछ करेक्शन आती है वो और उसकी स्ट्रेंथ को ही बढ़ाता है। जी, मुझे लगता है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का वो पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। निफ्टी सेंसेक्स दोनों ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। बीच बीच में कंसोलिडेशन होने के लिए करेक्शंस आती हैं, वो उसको और मजबूती प्रदान करती है। ग्लोबल क्यूज भी उस तरह से कुछ सेक्टर्स आज जो कंटिन्यूअसली जैसे मेटल वगैरह अच्छे स्ट्रांग चल रहे हैं, तो ये सेक्टर इसलिए भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ कमोडिटीज में इन्फ्लेशन कुछ कंट्रीज में काफी है, उसका असर यहाँ दिखता है। अदरवाइज ओवरऑल इंडियन मार्केट स्ट्रांग है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, FIIs का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ग्लोबल जितनी भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक है, IMF है और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भारत के प्रति पॉजिटिव रुख है कि भारत की आने वाले वर्ष में 2023 में जो अभी है उसमें ग्रोथ जो है वो अराउंड 7% के पास GDP ग्रोथ रहने वाली है। वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग सेंटिमेंट दर्शाती है इंडिया की ग्रोथ पर्सपेक्ट को। बाकी चाइना अपने आप में अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में गुजर रहा है। अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं चाइना की इकोनॉमी में काफी ज्यादा दिक्कत है। यूरोप एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है जी, US में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो इंडिया ब्राइट स्पॉट के रूप में खड़ा हो रहा है। और अभी बजट आने वाला है, बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारी जो टैक्स कलेक्शन, टैक्स टू GDP रेशियो है वो अच्छी बढ़ोतरी के साथ है, तो वो और स्ट्रेंथ कर रही है कि आने वाले बजट में अच्छे प्रोविजंस आएंगे जी। And now we're joined by Sri Rakesh Bansal, with whom we will discuss about the market performance today. Rakesh ji, a warm welcome to you on Market Mantra. Thank you very much for inviting me. And it's good to have you on the program, sir. What's your take on how the market performed today? We had Gopal Krishan give us just a broad overview of market performance today from the macro standpoint, but as a trader we saw that the DIIs are once again the net buyers in the market to the tune of 1,225 crore rupees. The FIIs were net sellers to the tune of 319 crore rupees. We saw a strong recovery in the rupee by 52 paise. How do you see the market sentiment right now? You have the big buyers selling, you have a short covering by the DIIs, including mutual funds. Do you see this trend continuing, and what would you advise investors? Firstly, I feel the strength is likely to continue, and the most important, we are forgetting the power of the retail investor. Retail investor is continuously the buyer, either through the mutual fund or through direct investment. And as of now, it's happening for the very first time. FIs are our net sellers in the year 2022. Still, we are closing in a positive note. And I feel in the 2023, we are likely to witness a big outperformance. And as of now, you see market is showing strength and large caps are participating in the rally. And I feel post-budget we'll see this rally turning into a broad-based rally, and we'll see mid-cap and small caps will also participate into the rally post-budget. So I feel this is a time to focus on markets. And as of now, one should go for a value buying, and one should do if the view is short term, one can go for a swing trading. But the one sector which is metals, this sector one should not ignore. The reason being that is that the China has reopened, and we are seeing FIs are putting money into the China market also, and we'll see a big rebound in the metals, be it steel, be it non-ferrous. And I'm very bullish on the metal space. And on the other hand, if you see, market participants are also betting heavily on the Hindustan Unilever. Market is betting we'll see a double-digit volume growth. So it's going to be a broad-based rally where on the one hand, defenses like lever are showing strength, and on the other hand, metal counters like Tata Steel, Steel Authority, Vedanta, Hindustan Copper, they are showing strength. And
one more sector I think which one should not ignore is the PSU theme. And if you see like in the PSUs, still the stocks are there which are giving dividend to the tune of 7%. GAIL is there. Dividend to the tune of 10%. Stocks like NMDC are there. So we are going to see a big re-rating. One has to focus on the themes. Like for example, we all are very bullish on the EV theme. Can we imagine the EV without copper? And the 70% of the copper in India is controlled by Hindustan Copper. So there are many multi-bagger stories, many theme-based stories. And I think one should focus on these themes and ignore the noise of FIs as of now. राकेश, आपने कई सारे सेक्टर्स का जिक्र किया और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई बड़ी कंपनियां भारत में सेटल होने की कोशिश में हैं और हो भी नहीं, तमाम कोशिशें जारी है। मैं ऑटो सेक्टर के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि इसकी ग्रोथ आपको किस तरह से दिख रही है आने वाले समय में, खासतौर पे आज से लेकर 2 साल की हम बात करते हैं तो। नहीं, आपने मेरी एकदम मुंह की बात छीन ली। जब आपने मैन्युफैक्चरिंग का नाम लिया तो मेरे मस्तिष्क में सिर्फ एक ही सेक्टर आया, निफ्टी ऑटो जी। देखें तो 2017 में एवरीबॉडी, हम सब लोग बात करते थे कि मारुति 20,000 हो जाएगा, ठीक है, और वहां से ऑटोज में करेक्शन देखने को मिली। एज ऑफ नाउ ऑटो इंडेक्स जो है टेक्निकली आप देखें तो एक रिबाउंड दे चुका है, 2017-18 के हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एकदम मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर हैं तो निफ्टी ऑटो का ETF 2 साल के लिए लेके जाएं। और मेरा ये मानना है कि 2 साल के अंदर निफ्टी ऑटो 40% का एप्रिसिएशन मौजूदा स्तरों से दिखाने का पोटेंशियल रखता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये तो एक बात हुई टेक्निकली जी, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑटोज की तरफ देखें तो वर्स ऑटोज का ओवर लगता है। और अभी एक मतलब कि बड़े नोटेड इन्वेस्टर हैं भारत के, विजय केडिया जी, वो अभी ऑटो एक्सपो में भी आए थे। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है, उनका ही स्टेटमेंट है कि वर्स्ट ओवर है, और उन्होंने बोला कि सन इज राइजिंग फॉर द ऑटो स्पेस। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन ऑटो स्पेस इन दी मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप बात करें। ऑटो सेक्टर मेरा टॉप पिक होगा। और एक चीज मैंने देखी है कि एक रिटेल निवेशक की बात करें, एक HNI की बात भी करें, वो भी बेंचमार्क इंडेक्स को ना आउट परफॉर्म नहीं कर पाता। बड़े से बड़े PMS भी बेंचमार्क इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर हम देखें तो 80% ऑफ द लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी बेंचमार्क इंडेक्सेस को अंडर परफॉर्म करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इधर उधर का ज्यादा गणित ना लगाते हुए एक सेक्टोरल एक बेट लेना चाहिए। निफ्टी ऑटो का ETF अवेलेबल है तो उस पर फोकस करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है 40% का एप्रिसिएशन निफ्टी ऑटो का ETF दिखाएगा मौजूदा स्तरों से। राकेश जी, because we cater to our listeners who are small investors as well, and we encourage them not to take speculative positions and look at the fundamentals of companies as well in terms of value investing. The bullish positions that you have mentioned regarding auto or metal, what about the earnings of these companies? Will the price reflect the earnings? Should they look at the price to earnings ratio when they make any type of investment into buying into these companies? नहीं, बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि अर्निंग्स भी सपोर्ट करेंगी। रीजन देखें तो सब जगह पर PE का, EPS का आप एक्सपेंशन देखेंगे, और ऑटोज को आप देखें तो एकदम वर्स्ट में से निकल रहा है, साइक्लिकल टर्न अराउंड हो रहा है। ऑटोज का पीक आउट हुआ था 2017 में, पीक आउट हुआ था 5 साल की करेक्शन के बाद ऑटोज दोबारा से चलने को तैयार हुए हैं। और एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो सिर्फ ऑटोज में जो एक बड़ी रैली हमने देखी है वो हमने देखी है महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखी है, और दूसरी एक रैली TVS मोटर में देखी है, बाकी ऑटो इंजीनियरिंग में देखी है। अभी तक ऑटोज के दिग्गज जो मतलब कि भारत का रिटेल निवेशक की जान है, मारुति, टाटा मोटर ने पार्टिसिपेट नहीं करा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि रिटेल निवेशक जो होता है उसको रिस्क अवर्स होना चाहिए, तभी मैंने कोई स्टॉक की बात नहीं करी, मैंने ETF की बात करी। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, बेसिकली पैसिव इन्वेस्टिंग है, जो कि भारत में इतनी लोकप्रिय नहीं है अभी। अगर आप विदेशों में देखें तो बड़े बड़े मतलब कि बड़े से बड़ा पैसा रूट के थ्रू मार्केट के अंदर आता है। और मेरा ऐसा मानना है कि रिटेल निवेशक को ETF के थ्रू ही निवेश करना चाहिए। तो अगर आपको सेक्टोरल बेट लेना है 1.5 से 2 साल का, तो निफ्टी ऑटो एक अच्छा विकल्प है। मेटल्स का हमारे पास ETF उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने वहां ETF की बात नहीं करी है। और जिस तरीके से हम रिटेल निवेशक की बात कर रहे हैं, तो मेरा अगर आप देखें सेंसेक्स 1980 में 100 का था, आज 43 इयर्स में 60,000 का है।
600% हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 15 से 20 साल में जो कंपाउंडिंग हमने पीछे देखी है उसको भी हम बीट करेंगे। तो जिनके बच्चे छोटे हैं, जो न्यूली मैरिड है, जो भी मार्केट में आए हैं, उनको तो मेरे समझ से और कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए कि निफ्टी के ETF में पैसा लगाए। देखिए, जब मैं पढ़ लिख के कमाना शुरू करा था तब कहते थे कि पहला काम होना चाहिए कि PPF में पैसा डालो। तो आज की डेट में पहला काम होना चाहिए कि पहला सेविंग निफ्टी के ETF में जाना चाहिए। Well, thank you so much, Rakesh, for giving us your valuable thoughts on the market performance today. We're heading for a short commercial break. We'll be back with more on Market Mantra. अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। और गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका फिर एक बार स्वागत है। नमस्कार जी। गोपाल जी, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा सेंसेक्स और निफ्टी से रिलेटेड। आईटी सेक्टर में फिलहाल मंदी की खबरें वर्ल्ड वाइड सुनने को मिल रही हैं, तो भारत में इसका आईटी सेक्टर के बाजार पर कुछ असर पड़ सकता है, ऐसी कुछ संभावना आपको नजर आती है क्या? देखिए, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में डिसरप्शंस हो रहे थे और इसका रिट्रेंचमेंट वगैरह की भी हमने कई चीजें सुनी सोशल मीडिया वगैरह पे और भी कई कंपनीज की, टेक कंपनीज की। लेकिन भारत में जिस तरह से फिनटेक वगैरह इंप्रूव हो रहे हैं, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, भारत में मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल क्यूज थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं आईटी सेक्टर के लिए। लेकिन भारत में जिस तरह से फिनटेक का बड़ा मूवमेंट आने वाला, फिनटेक जैसे जो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, या जो ई कॉमर्स कंपनीज के बारे में डिजिटल डेटा के ऊपर सरकार का इनिशिएटिव, न्यू डिजिटल पॉलिसी वगैरह आ रही है, तो इस सेक्टर को काफी सपोर्ट है। दूसरा, एक बड़ा आईटी सेक्टर, उसके लिए एक बॉटलनेक बन रहा था चिप के बारे में, चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक बॉटलनेक आ रहा था, उसको हटाने के लिए सरकार ने 90,000 करोड़ का PLI इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया था। तो और सरकार का बहुत इनिशिएटिव है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग की बॉटलनेक को हम हटाने के लिए भारत में इस सेक्टर को डेवलप करें। तो फिनटेक, डिलीवरी मैकेनिज्म में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज, ई कॉमर्स, डेटा, न्यू डेटा पॉलिसी और एक लार्ज मार्केट प्लेटफॉर्म्स, आप API जो डिजिटल ट्रांजेक्शन के प्लेटफॉर्म्स हैं या एप्स हैं, उन सब का भी ग्लोबल लेवल पे बहुत भारत के सारे हैशटैग और पेमेंट वगैरह के UPI वगैरह का बहुत इम्पोर्टेंट जो ग्रेट ग्रोथ हो रहा है। तो यह मुझे इतना नहीं लगता कि आईटी सेक्टर का जो ग्लोबल फैक्टर है उसको हम ओवरकम नहीं आसानी से कर पाए। लेकिन बात यह है कि सेक्टोरल चीजों में हमें उन सेक्टर्स में जाना चाहिए जो आने वाले समय में अच्छे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के रूप में सामने खड़े होते हैं। एक बड़ा सेक्टर है, क्योंकि G20 की हमने प्रेसिडेंटशिप इस साल ली है और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं जी। वाले इस साल में भारत की जो कल्चरल इकोनॉमी है, जो फेस्टिवल्स है, टूरिज्म है, जो और कॉटेज इंडस्ट्रीज के ODOP प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको हम ग्लोबल कम्युनिटी में शोकेस करेंगे। और वह एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इस तरह से सामने आ रहा है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और इस तरह के कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल इकोनॉमी को ग्रोथ देने की बात है। तो मुझे लगता है कि टूरिज्म, आर्ट, कल्चर, इस तरह के इकोनॉमी पे अभी एक तरीके से ग्रोथ आने की इस साल उम्मीद है, क्योंकि G20 इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पे हमारे इंडिया के ब्रांड को मजबूत करने के लिए काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
और अब अगली खबर पर हम आगे बढ़ते हैं तो एशियाई शेयर बाजारों में थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज अधिकतर बढ़त का रुख देखा गया। केवल दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.5% की सुस्ती दर्ज हुई। जापान का निक्केई सूचकांक 2.4% लाभ में रहा। हांगकांग का हेंग सेंग सूचकांक 0.5% ऊपर आ गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% चढ़कर कारोबार कर रहा था और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों की हम बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यहां भी कोई खास उतार चढ़ाव नहीं दिखा गया। लंदन का FTSE 100 0.2% ऊपर चल रहा था। जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का कैक करीब सपाट होकर कारोबार कर रहे थे। Gopalji, what's your take on the China COVID situation? They have reversed their policy. There was a lockdown, very strict lockdown. Now they've opened it. What does this mean for the movement of Chinese business and the opportunity for India in this interim period when there was a lockdown and post-lockdown? If you look into the period of the lockdown, even in this lockdown, our trade with China has improved, and we have crossed around $120 billion. So the trade with China has been increasing in spite of all the bottlenecks and the restrictions and the supply chain constraints. China has opened up. It will not be counterproductive to us because China supplies lot of containers are also available. They are controlling lot of supply chain mechanism, and even commodities etc. are being supplied by China. Though they have domestic problems, but as such Chinese opening up will not be negative for us. And at the same time, global perception about India to invest into India in addition to their investment and manufacturing facilities in China, that sentiment is continuing. So China's opening up, though domestically they have problems, but as far as Indian economy, it will not have a negative impact on us. But, the sentiment of the other European and other countries to invest into India for their setting up manufacturing facilities is continuing. Government is also working on our bilateral trade agreement with countries like Australia, UAE, Europe, and USA, and UK, etc. These bilateral trade agreements will benefit our manufacturing sector. Some 2-3 days back, we saw that the government policy of domestic procurement for the defense sector was targeted to be 60%. It has crossed more than 68%. So the government policy of supporting our defense sector is also bringing good results. Manufacturing sector will show good growth with the PLI schemes, and if the government policy of pushing money directly into the hands of the rural economy is going to support the demand market. So overall, if you look, the economic perspective for India in 2023 is very bright because of manufacturing sector growth and support from the government, the push of the money into the rural sector which will create demand. We just heard of the Prime Minister say that more than 3.7 crores houses have been built in Pradhan Mantri Awas Yojana, and people at times feel that how it will help the middle class. It will create demand for steel, cement, construction equipment. All this will benefit the business community. So government push on the Gati Shakti infrastructure, building airports, building houses, etc. is indirectly supporting the demand in the economy, and therefore the positive sentiment of investment in the private sector is also continuing. Well, let's have a look at the U.S. market now. The Dow fell more than 1% yesterday as weak earnings from Goldman Sachs had dragged the index lower, but a jump in Tesla shares helped the Nasdaq stay positive as the corporate earnings season took center stage. The Nasdaq Composite Index added marginally by 0.1%, while the S&P 500 fell 0.2%, and the Dow Jones Industrial Average Index declined 1.1%.
Gopalji, what's your take on the US dollar index, which is at 102? We saw the rupee gain by 52 paise in today's trade. What does this tell you about the dollar strength or weakness vis-a-vis India? Briefly. Dollar is appreciating vis-a-vis many of the currencies in the global arena, though it is appreciating in terms with Indian rupee also, but that appreciation is not in comparison that high with other appreciation of dollar with other currencies. The support, I think the US economy is increasing the interest rate and strengthening of the interest rate through the bond market, particularly of Japan, etc. They have the impact on the global flows, and therefore we see that some of the money is in the financial in our capital market when there is a expectation that the interest rate will firm up in the Gopalji, we have to now read the oil story. Oil prices today rose to the highest since early December on optimism that the lifting of China's strict COVID-19 curbs will lead to a fuel demand recovery in the world's top oil importer. The crude prices climbed more than 1%. In intraday trade, Brent crude was trading at $87.20 per barrel, while WTI crude prices was at $81.60 per barrel. And on this, we're joined by oil expert Narendra Taneja. Narendra ji, a warm welcome to you on Market Mantra. Thank you. Thanks for having me. Well, we can see that China has now lifted the COVID restrictions. The prices that we are quoting are future-based. To what extent do you see a differential in the spot and the futures prices? And is a trend likely to see prices go up? Well, I think, they might go up because there seems to be some good news from China, but I think China is going to take at least another 4 or 5 months before things stabilize in terms of demand. What we are witnessing in China, they're importing crude oil, but yet they're refining and then selling petroleum products like petrol, diesel, turbine fuel, and so on and so forth. So that's not really reflecting the exact demand or the consumption by China. But that said, at the same time, my own sense is that in coming 3-4 months, what we're going to see is crude oil price in the band of about $85 to about $100 per barrel. I mean, sometime it may cross 100, sometime may even dip below 85, but on an average, I think between $85 to $100 per barrel in coming 3 to 4 months. After that, we'll have to see what happened to Ukraine, what happened to, recession we are seeing in some parts of the world, and of course also what happens to China, because United States, China, India, these are 3 most important markets when it comes to oil. And what is it likely for India when it comes to paying the oil bill? Well, for India, I think the government has managed it very well. And, despite criticism by some countries, India is buying oil from Russia increasingly more, which makes a lot of sense because good for economy. China is buying heavily from Russia and several other countries. So there are 2 markets now to source crude from. One is, of course, OPEC and the western part of the world. The other is led by Russia. So that factor, in fact, that India is buying, China is buying, some other country buying Russian oil, has basically helped the oil prices under control. Had that not happened, the oil prices by now would have been $120 per barrel. So thanks to Russian oil, which India is buying, China is buying, their oil prices are in the range that they are today, and which is good news for Indian economy, for that matter, for all other oil importers. Well, thank you so much, Mr. Narendra Taneja, for being with us on the program Market Mantra and giving us expert views on the oil market. और हम बात करते हैं सोने की, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 65 रुपए मजबूत होकर 56,415 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 390 रुपए के उछाल के साथ 69,580 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना ऊपर चढ़कर $1,917.20 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था और अंतर दिवसीय कारोबार में चांदी भी लाभ में रही और ये $24.40 प्रति औंस पर चल रही थी। And we would also like to thank our in-studio expert, Shri Gopal Krishna Agarwal, Senior Economist, for being with us on the program Market Mantra. Thank you. Now, before we close, a reminder of the headlines. Domestic stock indices have witnessed gains of more than 0.5%. Sensex closes above the 61,000 mark. Nifty settles above 18,150 level.
The rupee logs robust gain of 52 paise against the US dollar, and Brent crude rises to $87.20 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.